Good evening, everyone. So, how many total Leo connecting points are there? कितने Leo connecting point होते हैं total? So, there are total number of the Leo connecting points are 15. How many? 15. Because how many meridian we have? 12 plus 2. Okay, okay. So, we are also discussing Du meridian, the Ren meridian. So, we are having Leo connecting point of Du meridian as well as the Ren meridian also. So, they are 14. And one last one that is called Great Leo connecting point. Now you can understand that one place who are having bypass with all the 12 meridians, that is called Great Leo connecting point. So now we are going to understand very wonderful thing about the Leo connecting point. Then we'll be discussing source point or the yon source point. Then we are going to discuss how to use these point combination for the patient, especially paralytic patient. Suppose one person is having one side paralysis. So finding out the quality or the characteristic of the paralysis and transferring energy from right to left or left to right. So now we will do this just by 2 points. Source point and the Leo connecting point. So very important topics coming now, okay? So let me first clear all the 15 Leo connecting point. Then we'll discuss the source point. Then we'll discuss how to transfer energy. I will give just hint to many time person is coming with a paralysis that is called flaccid paralysis. Flaccid means lunj, punj, dhila, latka, loose. Person is having paralysis like this, dropping of the hand. Like, so things are very loose and there is no grip also. Another patient will come to you, spastic means very tight. If you open the finger, again person will do like this is called tight and spastic. So how to balance right and left with a combination of 2 point, we will see. Just with the help of 2 point combination, we can do very good treatment. So let's start with the Leo connecting point first. So this is the list which we made already earlier. कल हमने जो list बनाई थी हमारी. So we can see here the Leo connecting point of the, ये हमने एक list बनाई थी कल. So the Leo connecting point of the lung, large intestine, stomach, spleen, heart, small intestine, urinary bladder, kidney, pericardium, triple wormer, gallbladder, and the liver. So this is the list of the 12 Leo connecting point. ये हमारी 12 Leo connecting point की लिस्ट है. चलिए एक बार क्विकली फिर से बनाते हैं. So now we are making the list of 15 Leo connecting point. So lung, large intestine, stomach, spleen, heart, small intestine, urinary bladder, kidney, pericardium, triple wormer, gallbladder, liver, then DU, REN, and great Leo connecting point.
So the luo connecting part of the lung will be lung 7, Li 6, stomach 40, spleen 4, heart 5, Si 7, urinary bladder 58, kidney 4, pericardium 6, triple bowel 5, gallbladder 37, liver 5. Then the great luo connecting point will be spleen 21. ये हमारा great luo connecting point है, spleen 21. So now the RAN meridian, the luo connecting point of the RAN will be RAN 15 or CV 15. ये हमारा लियो कनेक्टिंग पॉइंट है इसका RAN मेरिडियन का, एंड द ड्यू मेरिडियन लियो कनेक्टिंग पॉइंट इज ड्यू 1. दैट्स इट, सो सिंपल. ये हमारे सारे के सारे लियो कनेक्टिंग पॉइंट हो गए. Yesterday we have discussed about many, few are remaining. So today we have to discuss mainly DU RAN great Leo connecting point. We have to discuss these many Leo connecting points. So let's start. Okay. So now we are going to discuss all the 15 Leo connecting point quickly. Now one more information. Yesterday we were talked about the Leo connecting point, that any Leo connecting point can treat their partner channel. कोई भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट अपने पार्टनर चैनल को ट्रीट कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, lung 7 can treat the problem of the large intestine. lung 7 क्या ट्रीट कर सकता है? If there is any problem in the large intestine. So lung 7 can treat the problem of large intestine. For example, constipation or the any bowel problem. Now one more information I will add you today. The Leo connecting point can treat partner channel, and Leo connecting point can treat also self channel. So lung 7 can treat large intestine. Lung 7 can also treat lungs. वो खुद को तो ट्रीट कर ही सकता है, पार्टनर चैनल को तो ट्रीट करेगा ही करेगा, लेकिन वो खुद को भी ट्रीट कर सकता है. गॉट इट? सो लंग 7, हमारा जो लंग्स है will work on the problem of large intestine, like we have discussed, like the constipation. But the lung 7 also will work on the problem of the lungs. हमारा lung 7 लंग की प्रॉब्लम पर भी काम करेगा, जैसे अस्थमा या लंग की कोई भी प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और लंग की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होना, लंग 7 उस पर भी काम करेगा. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट added information about the lung 7. So lung 7 will work on lung disease as well as constipation. Lung 7 will work on large intestine as well as lung. If the person is having grief, sadness,
depression. Remember one thing, the Leo connecting point are one of the very good point to treat any emotional problems or any chronic problem. जब भी कोई बीमारी बहुत पुरानी होती है और हम इमोशन को ट्रीट करना चाहते हैं, we can work on Leo connecting. Got it? Fine. In the same way, we talk about the stomach 40. We can take the example of any stomach 40. Stomach 40 is the partner of spleen. And we know spleen disharmony will make the flame. So stomach 40 is good for flame, mental fog, formation of the dampness. But stomach 40 also very good if there is any problem in the stomach. ये stomach की problem को भी ठीक करेगा. It will not only working on the spleen. Let's take the example of pericardium 6. Pericardium 6 is the couple of triple warmer. Pericardium 6 is the couple of triple warmer that we know. Pericardium 6 will working on the pericardium. Pericardium 6 also will be working on the triple warmer. Pericardium हमारे pericardium पर भी काम करेगा, triple warmer पर भी काम करेगा. We know what is the pericardium? The pericardium is the covering. Pericardium is the covering of heart. Pericardium is called protector of heart. पेरिकार्डियम को हम कहते हैं ये हमारा हार्ट का प्रोटेक्टर है, हार्ट का गार्ड है. पेरिकार्डियम इज द गार्ड ऑफ हार्ट. सो पेरिकार्डियम विल वर्क on the triple warmer. Just take one example. The triple warmer meridian crossing this area. Triple warmer meridian crossing this area, like crossing the shoulder, the side of the neck. Triple warmer meridian crossing the ear. The triple warmer meridian crossing the arm. If there is a shoulder pain in the root of the triple warmer meridian, we can treat the triple warmer meridian with the help of pericardium 6. Because pericardium 6 is working on triple warmer. So pain in the root of the triple warmer. अगर ट्रिपल वार्मर के रास्ते में कहीं भी दर्द होता है तो पेरिकार्डियम उस पर वर्क करेगा. But not only this, pericardium also will be working on the chest cavity. So if the person is having any problem like the anxiety, किसी को anxiety है, chest tightness है, the pericardium is going to work. In the same way, we talk about the gallbladder 37. The gallbladder 37 is the Leo connecting point of the gallbladder. Definitely it will be working on the small intestine. ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पर काम करेगा, सॉरी लिवर पर काम करेगा. गॉलब्लैडर विल बी वर्किंग ऑन द लिवर. व्हाई? बिकॉज इट इज द पार्टनर ऑफ लिवर. So the person is having any type of eye problem, lots of stress, irritability, disharmony of the liver. We will work on the gallbladder 37
but the gallbladder 37 also will be working on the gallbladder channel, like person is having headache on the lateral side, or the person is having poor decision making power. Gallbladder 37 will be working on that condition also. So what I want to tell you, the Leo connecting point will be treating the paired channel, but the Leo connecting point treating also their own channel. Okay. So lung 7 and Li6. So lung 7 will treat the Li. So lung 7 will treat the constipation. And Li6 will be treating the cough, because they are treating their partners. Lung 7 treating the partner means constipation, and large intestine treating the cough. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? Is it clear now? So this is the beauty of the Leo connecting point. Now person is having lots of anxiety. Leo connecting point are the very good point for emotions. Person is having anxiety having connection either with the heart or with the pericardium. We can go directly. The Leo connecting point of the heart and the Leo connecting point of the pericardium can treat the anxiety. So we can make the list of all the emotions. And if the person is having any type of the emotional discomfort, we can directly treat the own channel by the Leo connecting point. Can you tell me anger is having connection with which channel? Anger. एंगर का संबंध कौन सी इमोशन के साथ है? लिवर के साथ. So which is the Leo connecting point of the liver? हमारे लिवर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट कौन है? लिवर का कौन सा लियो कनेक्टिंग पॉइंट है? लिवर 5 है कि लिवर 5? लिवर 5 is the लियो कनेक्टिंग पॉइंट of liver. So if the person is having any type of the chronic problem, old problems, or the emotional problem, directly we can go to the liver 5. Emotion are directly connected with the Leo. What exactly we are doing? हम कर क्या रहे हैं? गुस्सा कौन से चैनल में भरा हुआ है? लिवर में. हमने लियो पॉइंट लगाया और ट्रांसफर कर दिया लिवर एनर्जीज को. फॉर एग्जाम्पल, कि सिर में गैस हवा भरी है, सिर में घोल किया, हवा निकाल दी, हवा सिर का हल्का हो गया. Regarding the tonification sedation, we will discuss shortly. Can you tell me the which emotion having connection with the sadness or depression? कौन सा चैनल सैडनेस और डिप्रेशन से कनेक्टेड है? लंग चैनल, which is the Leo connecting part of the lung channel? Lung 7, just we can use lung 7 directly and we can see the transfer of energy and we can see the emotional balance. As per the acupuncture, emotions are nothing but only energy. Emotion सिर्फ energy है. And we can balance the energy. We can balance the chi. Even if you put the perpendicular, you will able to balance it. Even if you do even method, you will able to balance it. Can you tell me which emotion having connection with the feeling of fear or insecurity? Some person is feeling insecure or feeling fearful.
किडनी, विच इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ किडनी? हमारे किडनी का लियो कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा? Kidney 4. You put the kidney 4 and immediately you can see the energy will be balanced and the person will be feeling very good in the emotion like fear and the feeling of insecurity. Can you tell me which emotion having connection with the tendency of suicide or suicidal tendency? कब किसी के मन में ऐसी इच्छा होती है कि मैं सुसाइड कर लूं, लेट मी सुसाइड? So suicidal tendency is because of kidney. We can use the Leo connecting point of kidney. Got it? Which emotion having connection with the lots of worry? Always person having lots of worry and overthinking. Always worry and the overthinking. Spleen. And which is the Leo connecting point of spleen? हमारे spleen का Leo connecting point कौन सा है? That is spleen 4. So with the help of spleen 4, we can balance the, हम क्या बैलेंस कर सकते हैं? We can balance the worry and the overthinking. Got it? So now, fear का kidney है. Fear means kidney. Now let's talk about the gallbladder. चलिए हम gallbladder की बात कर ले. अभी इमोशन वाला पार्ट ओवर है ना, इमोशन समझ में आ गया. इमोशन यू कैन डू नाउ. You can make one chart. Liver means anger. Liver means frustration. Liver means aggressiveness. Heart means anxiety, palpitation. Heart means anxiety. Anxious. Then spleen is having worry and overthinking. Lung is having connection with the sadness, depression, crying. Kidney having connection with the fear, feeling of insecurity, suicidal tendency. ये सब किडनी है. So whichever the emotion we want to treat, go to the same channel and stimulate the Leo connecting point. For example, sadness, which is having connection with the lung, use the same point. Kidney for fear, right? Perfectly all right. Got it? So Leo point, now emotion part is over. Now we are coming to our previous part. What was the previous part? The Leo connecting point can treat the partner channel, and the Leo connecting can treat their own channel also, both condition. हस्बैंड अपनी वाइफ को भी ट्रीट कर सकता है, लेकिन हस्बैंड खुद को भी ट्रीट कर सकता है. सेम फॉर वाइफ. तो हम समझ चुके हैं कि लंग 7 कैन ट्रीट द लंग and also large intestine like the constipation, piles and all. Is it clear? लंग 7 का मामला समझ में आ गया. स्प्लीन भी समझ में आ गया. स्प्लीन कैन ट्रीट their partner channel means stomach, so gastritis, stomach problem, gas, acidity, indigestion. Spleen can treat all the problem which is having connection with the stomach.
because spleen can treat the partner channel, but spleen can treat their own problem also. Like some person is having bloating, खाना खाने का पेट का फूल जाना, bloated stomach. That is because of the spleen, or lots of drowsiness. So spleen 4 can treat their own channel. अब हम बात करते हैं जो हमारे रह गए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी, द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ किडनी। If we are using less, yeah, definitely we can use bilateral also. Definitely you can use also bilateral. Who is the partner of kidney channel? Can you tell me? हमारे किडनी चैनल का पार्टनर कौन है? Urinary bladder. And what are the problem happening in the urinary bladder? Any type of the problem in the urinary bladder, like urinary tract infections or urinary bladder related problems, or the frequent urination, or the weak bladder, incontinence of the bladder, no control on the urine, any problem of the urinary bladder, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो यूरिनरी ब्लैडर में होती है। So if any problem happening in the urinary bladder, we will come to the kidney and will stimulate kidney 4. Even I will tell you, the person is having lots of problem on the bladder. Even you touch the kidney 4, it will be tender and painful. आप दबा के देख लें, अगर व्यक्ति को यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम होगी, किडनी 4 पर दर्द मिलेगा. This point will be a hasi point, painful point, or the tender point. So for any problem happening in the urinary bladder, we can treat the kidney. And if any problem happening kidney, then also we can treat the kidney, like all the kidney related problems. Like person is suffering with the lower back pain, or there is a protein in the urine, proteinuria, or the nephrotic syndrome, kidney failure. We will make the formula, and in that formula we will also put kidney luo-connecting. Structural problem of the kidney as well as the functional problem of the kidney stone or the urinary tract infection, any problem of the kidney or any problem of the urinary bladder, we can treat with the help of kidney 4. So kidney 4 is very, very important. लेकिन अगर आप पूछो कि किडनी 4 सबसे बेहतर किसके लिए है, then I will tell you kidney 4 is better for urinary bladder comparatively. हस्बैंड को खुद को पेडिट करना और वाइफ, जैसे हस्बैंड ने ऑर्डर किया पाव भाजी, हस्बैंड भी भूखा वाइफ भी भूखे, तो पहले वो वाइफ को खिलाए, ज्यादा होगा तो खुद भी खाएगा. अगर उसने खुद खा लिया पहले, तो अब उसको 1 महीने तक खाने की छुट्टी उसकी. Got it? So if your partner is hungry, if you have to feed your partner first, then you can feed yourself. Okay. So the first responsibility goes to the partner channel, because Leo connecting point has made for that only. Leo connecting point बने उसके लिए भाई, bypass. Yes, definitely we can add both also. Yeah. In the many protocol, you will be learning how to make the protocol. Okay. In the protocol formation, when we will combining all the points and we are making the protocol, then you will understand. Let's go to the Leo connecting point of urinary bladder. अब हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की बात कर लेते हैं. As per our list, which is the Leo connecting point of urinary bladder? Can you tell me? That is urinary bladder 58. अगर आपने यूरिनरी ब्लैडर 58 को दबा भी दिया,
तो कमर का दर्द चला जाए। निडल तो छोड़ो, आप दबा के देख लो। कोई बोले मुझे कमर में दर्द हो रहा है, okay, you are having, I am having right side lower back pain, so lower back pain means kidney. We will go on the same side and press the urinary bladder 58. It will be painful. As soon as you press it, pain will disappear immediately. Or you can press 5 to 7 times. Then you can ask the patient how you're feeling. Oh, I'm feeling much better. Just by single point, you will able to treat, because urinary bladder 58 will treat the lower back pain, or the, if there is any problem in the legs, fatigue of the leg. Okay. But urinary bladder will treat. So first responsibility of the urinary bladder goes to the kidney. यूरिनरी ब्लैडर की जो पहली जिम्मेदारी है वो क्या है? किडनी। लेकिन खुद की भी जिम्मेदारी है, बट दैट इज सेकंड वन। सो यूरिनरी ब्लैडर कैन ट्रीट हिमसेल्फ, but first it has to work on the lower back pain or the weakness of the lower back or the leg pain and all. Okay. Then we are coming to the triple warmer. The triple warmer is the Leo connecting point of, so the Leo connecting point of the triple warmer is क्या है? हमारे ट्रिपल वार्मर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? एंड लियो कनेक्टिंग ट्रिपल वार्मर किसका पार्टनर है? लियो कनेक्टिंग पॉइंट किसका पार्टनर है? पेरिकार्डियम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिकार्डियम इन द सिंपल लैंग्वेज? पेरिकार्डियम का मतलब क्या है? द पेरिकार्डियम इज द ब्रेन मेरिडियन और द गार्ड ऑफ हार्ट. एब्सोल्युटली राइट. It is the covering of the heart. It is the protector of the heart, pericardium. But you can see the other name of the pericardium is brain meridian. In the Chinese acupuncture text, what is the meaning of pericardium is written? The meaning of pericardium written, the covering of heart, in the bracket it's written covering of brain. So many Chinese acupuncturists are thinking heart and brain are same. Definitely they are not same. But they are telling it because of heart is very deeply connected to the brain. Your memory is deeply connected with the heart. If heart is not good, you will not recollect anything. You will not able to memorize anything. Okay, recollect is a different condition, but you will not able to memorize anything if heart is not good. Okay, coming back. What is pericardium? Pericardium is brain meridian. Pericardium is covering of heart, protector of heart. As soon as I press the triple warmer 5, the brain fog will go away, dizziness will go away immediately. एक सिंगल पॉइंट लगाया और चक्कर ठीक हो जाएंगे भाई. ऐसे घूम रहा था से, dizziness will go away, mental fog will go away. The triple warmer 5 will open up the channels of the brain. Previously, in some part, some energy was not going. कुछ एनर्जी जा नहीं रही थी, तो चक्कर आ रहे थे. As soon as you press the pericardium 5, sorry, triple warmer 5, it will open up the head channel. Then it will also open up the heart channel. Palpitation will go away. If the person is having palpitation, you press the triple warmer 5, but just pump the triple warmer 5. Pump. And after 30 seconds or 1 minute, palpitation will reduce immediately.
So triple warmer 5 is very good point for pericardium, means tightness of the chest. The tightness of the chest will go up. Sleepiness is having connection with the spleen. Excessive sleepiness is because of the, or the drowsiness is because of the flame. अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सोता है मतलब उसके शरीर में कफ ज्यादा है, और कफ का निर्माण होता है स्प्लीन की कमजोरी से. पेरिकार्डियम इज अ डिफरेंट थिंग. So pericardium, you stimulate the triple bomb of 5. As soon as you press the triple bomb of 5, the tightness of the chest will go away, stress will go away, anxiety will go away, it will clear the chest, it will clear the emotional stagnation, and your brain will, and heart, brain and chest will get good amount of energy with the help of triple warmer 5. Why? Because triple warmer 5 is the partner of pericardium. Got it? इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट फॉर्मूला, है ना, सिंगल पॉइंट फॉर्मूला. And the triple warmer 5 has to treat their own channel also. खुद को भी ठीक करना. तो ट्रिपल वार्मर means upper warmer, middle warmer and lower warmer. ट्रिपल वार्मर का मतलब यही है कि क्या मतलब है, who is warming the upper body, who is warming the middle body, and who is warming the lower body. तीनों बॉडी को जो वार्म करता है वही तो ट्रिपल वार्मर. ये देखिए ट्रिपल वार्म मेरिडियन है. दिस इज द ट्रिपल वार्म. But if you go inside the triple warm meridian, we can see there are 3 stars. Upper star means it is warming the upper body. Middle star, it is warming the middle body. Lower star, it is warming the lower body. Warming means it is sending the energy. If the lower body is not getting energy, person will get infertility or impotency. If the middle body is not getting energy, person will suffer with the liver, gallbladder, spleen, stomach problem. If the upper body is not getting energy, person will suffer with the heart and the brain problem. So as soon as you stimulate the triple burn of 5, it will send the proper energy, good amount of the energy, removing the blockage so that energy can reach on all the 3 parts. जब ये तीनों पार्ट में ऊर्जा बहती है, पहुंचती है, तो नीचे एनर्जी पहुंचती है तो इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है. बीच में एनर्जी पहुंचती है तो डाइजेशन ठीक हो जाता है. ऊपर एनर्जी पहुंचती है तो पाल्पिटेशन ठीक हो जाता है और कार्डियक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ब्रेन ठीक हो जाता है. So triple warm up 5 treating partner channel as well as on channel. Got it? अभी हमारा कौन सा बाकी है? हमने देखिए LI6 समझ लिया, we completed LI6, lung 7, spleen 4, stomach 40. हाँ वो तो 3 बाकी हैं, वो तो बताऊंगा. SI7 बात की, SI7, small intestine 7. Yeah, yes, we have discussed. We have discussed heart 5, kidney 4, urinary bladder 58, triple bomb of 5, pericardium 6, liver 5, gallbladder 37. All over. 12 meridian over. कोई बचेगा तो बता देना बाद में. So now let's discuss the luo-connecting point.
DU1, RAN 15 and the great Leo connecting point spleen 21. ये हमारे तीन बहुत ही बेहतरीन लियो कनेक्टिंग पॉइंट। हमने कल बताया था SI7 इज द पार्टनर ऑफ हार्ट। So if any problem is having any type of the problem of the heart, like anxiety, anxiousness, even the palpitation, so we will go to the SI7 because SI7 is the Leo point of the partner. So SI7 will treat the heart. Not only this, SI7 will treat their own channel, small intestine channel, means someone is having any problem in the root of the small intestine meridian. Okay. Chest pain, if the person is having chest pain, so it might be because of heart or the pericardium. So we'll go to the partner of the heart or the partner of the pericardium and we'll stimulate the Leo points. So the partner of the heart is SI7 and partner of the pericardium is triple bomb of 5. 2 points are very good point for chest pain. क्या clear है कि अभी भी नहीं है? If it is clear, then I can move to the 3 Leo connecting point. चलिए मैं बताता हूँ. If it is still not clear, you can ask me after that. So now I am going to discuss. क्या होगा कि जो actually क्या होगा when we talk about the emergency, that is called acute emergency. Leo collecting points, definitely we are using in emergency, we are putting in protocol, but Leo points are not for, in the real, they are not for emergency. They are for chronic problem. Then what for emergency? इमरजेंसी के लिए हमारा अगला पॉइंट आ रहा है ताड़ी प्लस स्ट्रीम लुमुसी एंड सॉक्सी सॉक्सी एक्स आई मींस जी क्लेफ्ट पॉइंट दैट इज कमिंग दैट विल बी फॉर इमरजेंसी वो आ रहा है पीछे पीछे आ रहा है ना अभी तो हम बात करेंगे अपने लियो पॉइंट की पहले देन सोर्स पॉइंट so now we are going to talk about the 3 points number 1 CV. Number 1, let's talk about the DU1. कौन सा पॉइंट है the first point of the DU meridian. You know the lower most part of the spine. क्या आप जानते हैं कि हमारी स्पाइन का एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट कहाँ होता है? That is tailbone. Are you aware with the tailbone? The tip of the tailbone is DU1. Exactly the tip of the tail. That is DU1. क्या आप इसकी लोकेशन देखना चाहेंगे या समझ चुके हैं? समझ गए होंगे ना टिप ऑफ द टेलबोन विल बी DU1. अगर नहीं समझेंगे तो मैं बता दूं आपको अपनी टेलबोन को फील करना है और उसी का है आई विल शो यू द इमेज चलिए देखते हैं सो लेट मी टेल यू अबाउट द DU1 फर्स्ट DU1 is very strong point because DU1 is the partner of DU meridian is the partner of CV channel. हमारे कौन से चैनल का पार्टनर है ये CV चैनल का पार्टनर है कंसेप्शन बेसल का पार्टनर so DU1 will be working on
DU meridian. And DU meridian, DU1 also working for CB meridian. हाँ, DU और GB are same. Yes, perfectly right. तो चलिए मैं आपको इसकी एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ. So we have to go to the tailbone. So exactly the tip of the tailbone, that is the location of DU1, just posterior to the anal part. Anus के ठीक पीछे. We can see the different image. So this is the location of tailbone or DU1. Got it? Yeah. Now, because it is a Leo connecting point, the Leo connecting point, DU1 branch from the DU1 is going and meeting with the CV channel. So when we are stimulating the DU1, we are also working on the CV meridian indirectly. So DU1 is a very important point if you want to work on the pelvic floor weakness. If you want to strengthen the pelvic floor, because CV meridian start from perineum. हमारा जो मल और मूत्र मार्ग, the CV meridian start from anus and genital part, from the perineum. यानी एनस और जेनिटल पार्ट की जो बीच की जगह होती है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, the root chakra, the Mooladhara chakra, the area of perineum, the area between genital part and the anal part. From there, CV meridian starting, that is also making pelvic floor. If you want to strengthen the pelvic floor, we can work on the DU1. So DU1 also working on the pelvic floor, DU1 also strengthening the CV meridian, and the DU meridian also strengthening the spine and the brain. Because DU meridian is nothing but spine and the brain. तो हम DU meridian हमारे spine के लिए, हमारे brain के लिए very good. It is very good channel for the brain and the spinal cord. It is very good. So with the help of DU meridian, we can work on the yang energy. Suppose someone is having epilepsy or the excessive energy in the brain, or the epilepsy is the result of the excessive energy in the brain circuit. We will stimulate the DU meridian 1 and will transfer the unwanted excessive energy in the partner channel. So DU1 become very effective. The person is having epilepsy or some neurological problem, but there is excessive energy in the brain or excessive yang energy in the brain, or there is too much headache in the brain, migraine in the brain, agitation. Okay, if you feel there are too much energy in the brain or in the spinal cord, and you want to transfer some amount of the energy from here, you can stimulate DU1. आप DU1 को stimulate कर सकते हैं. Even you can do the stimulation of the DU1 the sujo. So the DU1 is very good for the brain disorder, for the spinal disorder, for the pelvic floor strengthening, because it is sending the energy in the CV channel. So it is one of the very, very important point. It is clear? Now we are moving to the next point, that is the Leo connecting point of CV meridian, that is CV50. हमारा CV15. So we can look at here.
This is the location of CV meridian. CV50, just one chun below from the lower part of the sternum bone. हमारे स्टर्नम बोन के G5 प्रोसेस के थोड़ा सा नीचे होता है. Or from the navel, if we are going अगर नाभि से हम चुन मेजर करते ऊपर चले जाएं, then also we can reach. Let's see the other image here. नाभि से the navel means CV8. नाभि का नंबर जो होता है 8 नंबर होता है. Can you tell me if we go one chun, one chun, one chun, one chun, like 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, then 15 number will come, how many chun above? अगर आप एक एक चुन ऊपर जाते जाओ तो कितने चुन ऊपर पर आपको CV15 मिलेगा? So that is 7 chun, right? So we can see in this image here, हम यहाँ पर देख सकते हैं. So this is our sternum bone. ये हमारी sternum bone है. So from the lower part of the sternum bone, if we go one chun down, that is the location of CV50. Or from the navel, if I am coming 7 chun above, that is the location of CV50. The CV15 is the luo-connecting point of CV meridian. It's a very important luo-connecting point. Number 1. If the person is having any cardiac problem, CV15 is very nearby. As soon as you put the point CV15, you will able to work on the cardiac problem because of the local. CV15 is very deeply connected with the cardiac problem. हम जैसे CV15 को stimulate करते हैं, so the CV15 is connected to the partner channel. Partner channel means a DU channel. If there is any unwanted problem in the CV meridian, and as we stimulate the CV15, we can transfer the unwanted energy from this meridian to another meridian. हम निडल भी कर सकते हैं, या डेफिनेटली निडल करते हैं इस पॉइंट पर. So this is a very, very important point, that is CV15, and it is treating the CV meridian. So that's why we know the CV meridian is starting from the genital part, then crossing the abdomen, chest, throat, and CV meridian ending here. CV meridian हमारा यहाँ पर समाप्त होता है. So if we stimulate the CV15, we can work on the abdominal problem, we can work on the chest problem like the heart, we can work on the throat problem, we can work on all the problem from where CV meridian is passing. जहां से भी हमारा CV meridian जा रहा है, whether the stomach or the chest or the heart. So CV15 is very, very important for these all problems, but the most important CV15 where we are using very regularly, that is heart or the psycho-emotional balancing.
CV 15 का प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं हार्ट के लिए और साइको इमोशनल बैलेंसिंग के लिए। नंबर वन, इट इज द very near, it is very nearly located to the heart. किसी भी मेरिडियन बहुत ही हार्ट के एकदम बहुत नजदीक लोकेटेड है. So the person is having any emotions, any like the person is having anxiety, we can calm down with the help of CV15. Person is having fear, or person is having any problem like depression. There are multiple problems, multiple different type of the emotions. There are many emotions which is happening anywhere in the yin channel. We can work with the CV15. हम CV15 से केवल कोई एक इमोशन को कंट्रोल नहीं करते. With the help of CV15, we can work all the suppressed emotions, especially if any emotion creating the tightness of the chest or heaviness in the chest. कोई भी emotion, if any emotion is affecting your this line, like especially affecting the chest, or any emotion is disturbing your digestion, if any emotion disturbing your the problem of the genital part, CV15 is very good point, because many times some female are having menstrual problem because of some emotions. The CV meridian is crossing the genital part. Sometimes person is having a stomach problem because of the emotion. Sometimes having a tightness of the chest because of the emotion, or the some choking of the throat because of emotions. So whether the emotion of fear or the emotion of anxiety or the emotion of sadness, depression, any type of the emotion, if creating problem with genital part, stomach, chest and the throat, we can work with the CV15. हम CV15 से वर्क कर सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति बोले कि मुझे इमोशनली ब्लॉक लग रहा है, मेरी छाती में कुछ फंसा हुआ है, मेरे थ्रोट में कुछ फंसा हुआ है, if the person is telling you, I feel stuck, something is stuck in my chest, I am feeling too much blocked, any type of the psycho-emotional problem, we can work with the help of CV15. That's why it is one of the very good point. Now finally last, Leo connecting. अब सबसे आखिर में हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, दैट इज द ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ स्प्लीन मेरिडियन. हमारे स्प्लीन मेरिडियन का जो आखिरी पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं स्प्लीन 21. हाउ टू मेजर दिस पॉइंट? फ्रॉम द axilla, if I keep forefinger, then again forefinger, means 8 finger down. Axilla से अगर मैं 8 finger down जाता हूं, from the axilla if I am going 6 chin down or the 8 finger down, in the mid axillary line I am reaching on the spleen 21. Spleen 21 is the point located below the 6th number rib or in the 6th intercostal space. If I just do the tapping, if I do the, because the number is spleen 21, I do the tapping 21 times on the right side, 21 times on the left side. We will able to release the great amount, great level of the emotion. The heart, if either is enlarged. 2. Oblique superior insertion towards the heart is contraindicated in all cases. I will show you the location of this point. Let's see here. It might be painful. Yes, right.
So look at the location of the point from the mid-axillary line. From the axilla, if we are coming 6, chin down, we are reaching on this point. That is the location of spleen 21. Deep needle is contraindicated here because of the chest cavity. Got it? Because of the thoracic cage and chances of puncturing of the thoracic cage. So this is the great luo-connecting point. If we do the tapping on the 21 times on the right side, 21 times on the left side, so this is removing all the blockages of the and opening all the bypass routes. Block, it is very, very important point for everything, for throughout the body. ये पूरे शरीर के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे शरीर के. This point is doing whole body balancing. Suppose someone is having fibromyalgia pain, sometime knee pain, sometime back pain, sometime head pain, sometime eye pain, moving pain. Can be up to balance entire body. We can ask the patient, do the tapping here 21 times in the morning, 21 times in the evening, very gentle tapping, or we can do 3 times also. ये बहुत ही शानदार पॉइंट है सभी प्रकार की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए. इट इज एक्सीलेंट पॉइंट फॉर फाइब्रोमाइल्जिया, फटीग, and definitely it is very good point for spleen like muscles. So spleen 21 is called the great luo-connecting point or the whole body luo-connecting point. You can also do cupping. Simple cupping, you just put the cup and remove after 1 minute. So spleen 21 is not for one single meridian. Spleen 21 for whole body. तो हमने 3 की बात की, DU1, RAN 15 and spleen 21. DU1. DU1 for pelvic problem and all the brain and spinal cord problem, like the neurological problem. Then RAN 15. RAN 15 for all the emotions which is affecting your throat, your chest, your abdomen, but mainly for heart or psycho-emotional problems. RAN 15. Mainly it is for heart. Then spleen 21. For entire body, for all system. हमारे किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम स्प्लीन 21 का प्रयोग कर सकते हैं. Spleen 21 is very good for fibromyalgia, for pain anywhere happening in the body. In the TCM, we are telling it will improve the chi, it will improve the blood, it will improve the emotion, chronic problem, everything. तो हमारे 3 पॉइंट हैं. Spleen 21 is having connection with whole body. तो अब हमारे 15 लियो कनेक्टिंग पॉइंट हो गए. इसकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और जो हमने डिस्कस किया इसका PDF भी, so that you can use for your reference. So thank you so much. And now we'll continue the session. In the next session, we'll discussing the source point. Okay. So let's close the session. अब हमारी अगली क्लास होगी मंडे को, same time 7 o'clock. Now that will be only for enrolled participants. Okay. And all the enrolled participants, this information for all the enrolled participants. I have provided you homework of the 21 videos. Please, everyone has to see one video every day. प्रत्येक व्यक्ति को एक वीडियो एक दिन में देखना है. जो 21 वीडियोस खत्म करना है, right? That is mandatory. Got it?
Yeah, fine. Yeah, so you can unmute yourself. Yeah. हाँ बोलिए। जी नमस्ते सर। सर मैं ये जानना चाहती हूँ जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, क्या जैसे मैंने इसमें पीजी डिप्लोमा के लिए एनरोल किया हुआ है, तो मैं हूँ क्या इसमें? Yes, you are in, already in. थैंक यू सर। और सर आपने जो 11 वीडियोस बोले हैं वो लिवर 21 और videos, 21। हाँ 21 वो लिवर और हार्ट के वाले क्या? ऐसा बहुत ज्यादा लग रहा है एक साथ में, वो बेसिक्स वाला भी और क्यों, फिर ये एक भी। दिन में एक वीडियो कितना ज्यादा होता है? वो आपका जो बेसिक्स वाला बेसिक्स का वो भी चल रहा है साथ में। आई आपको मीन सिर्फ एक दिन में एक वीडियो देखना है उसका बस। अच्छा ठीक है एक, सर। इसीलिए तो दिया है ताकि आप उसको आसानी से खत्म कर। मैं एक दिन में अगर आपको वो एक वीडियो देखिए, हम्म। और इसके एक वीक में 3 ही वीडियो होंगे आपके, अभी तो पीजी डिप्लोमा के एक वीक में 3 वीडियो होंगे बस। अच्छा ओके, तीन और ही देख। उसका रोज एक वीडियो। अब कल से हाँ आपको 4 दिन तो आपकी छुट्टी है, तो ठीक है। आपको क्या करना है, एक दिन में एक ही वीडियो देखना है रोज। और सर जैसे आपने आज लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स वगैरह बताए, तो उनका जैसे पहले आप लगाने का भी बता रहे थे, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, पॉइंट मैं लोकेशन। ये भी सब बताऊंगा आपको। अभी तो क्या है ना हाँ कि थोड़ा एक बार आपको कनेक्शन समझ में आ जाए ना, कि अब मैं आपको सोर्स पॉइंट बताऊंगा, लियो पॉइंट बताऊंगा, तो फिर मैं आपको एनर्जी ट्रांसफर सिखाऊंगा। तो मैं अच्छा साथ में आपको पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर लेकिन आज मैंने एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट यूज किया था, मेरी मेड को अर्टिकारिया हो गया था रात से। हाँ, तो उन लोग के पास में ज्यादा टाइम नहीं होता, तो मैंने सिंगल पॉइंट GB37 यूज किया था और जीबी थर्टी उसको सेवन काफी आराम। जी जी जी, 37 ही है ना शायद। बस, मैंने यूज किया था और उसको काफी आराम आ गया सर जी। 37 जी। तो सर आपने, ओके, कैन यू एक्सप्लेन एवरी टू एवरीवन व्हाई यूज द जीबी 37? सर यू आर राइट क्योंकि व्हाई। अर्टिकारिया का, जी अर्टिकारिया का रिलेशन लीवर से है, इसलिए मैंने इसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट GB37 यूज किया। अर्टिक एरिया में जो खुजली आती है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जी दैट इज द जी allergic problem, liver problem. So we are going to the partner channel, gallbladder, and gallbladder 37 is the Leo connecting part of the gallbladder, and she got immediate relief. रिलीफ उनको से। आराम मिला। हाँ उनको तुरंत आराम मिल गया था। मॉर्निंग में मैंने लगाया 20 मिनट्स तो, लेकिन तो फिर आफ्टरनून में शाम को मैंने एक बार फिर से लगा दिया था उसको। so she is telling one person is getting skin problem like urtic area, red eruptions, and that red eruption of the urtic area having connection with the liver channel. So she used the Leo point of the partner, Miss Gallbladder 37. सर नीडिल नीडिल लगाई थी परपेंडिकुलर सर, क्या He करना था used मुझे पता perpendicular नहीं। needle मैंने and person got benefit, improvement. Very nice. सर ये सर एक्जिमा में सर भी हमने यूज 4 कराते हैं पॉइंट यूज क्या? किए थे। स्किन आप ये प्रॉब्लम है बताओ कि अभी तक ये भाई गुरुचरण लाल जी, हमने सारी रिकॉर्डिंग भेजी हुई है ऑलरेडी। कोई भी रिकॉर्डिंग बचा के नहीं रखी है? कोई बचा के रखी है रिकॉर्डिंग? नहीं बचा सारी। डन। सर हमने 4 पॉइंट एक यूज और किए थे। ट्रीटमेंट मैंने किया था सर, आपने डैम्प आप हीट वाला। हाँ, 4 कौन सा यूज पॉइंट किया? लियो कनेक्टिंग। जी सर, डैम्प 10। सर डैम्प हीट वाला ट्रीटमेंट किया था एक्जिमा सोराइसिस के लिए। तो मेरे जमाई आए थे और वो बाहर जाने वाले थे, तो मैंने उनको 10 घंटे करीब करीब लगा के छोड़ दिया, क्योंकि वो जाने के बाद तो लगाने वाले नहीं थे। तो उन्होंने पूना जाने के बाद में फोन किया कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, सारे जो एक्जिमास वगैरह है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक्जिमा के लिए क्या लगाया एक आपने? पॉइंट। जी सर। सर हमने कौन सा LU7 पॉइंट? SP4 ST40 और GB37। LU7 नहीं, रुको रुको एल पहले यू आपकी बात एक रुक जाइए 2 मिनट। आपने एक्जिमा के लिए क्या लगाया? सर वो डैम्प हीट वाला जो मुझे याद नहीं है, अच्छा देख के ठीक है, ठीक है, लगाया गॉट था इट। मैंने। ओके। हाँ डैम्प हीट। सदाम अली जी, आप बताइए, आप किस पॉइंट की, किस प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं? सर सर हमने
4 पॉइंट लगाए थे, LU7, SP4, ST40 और सर हमने लगाया था लीवर 5। आपने 4 लियो पॉइंट एक साथ लगा दिए। जी सर, प्रॉब्लम वो क्या थी? प्रोटोकॉल के साथ जुड़े थे प्रॉब्लम क्या थी? सर। प्रॉब्लम तो मल्टीपल प्रॉब्लम है सर, पेट भी खराब है, कॉन्स्टिपेशन कुछ रहता है, फायदा गैस मिला? एसिडिटी, फीलिंग सर बहुत बेहतरीन फायदा मिला, जबरदस्त, जबरदस्त फायदा मिला। गजब का रिजल्ट है सर। तो आज पेशेंट जो था काफी अच्छे से फील कर रहा था, और जो मेरा जो मुझे ब्लोटिंग होती थी उसमें बहुत फायदा मिला मुझे, जो मुझे गैस एसिडिटी थी और जो मुझे कॉन्स्टिपेशन था, तो उसमें काफी हद तक फायदा मिला सर। वेरी गुड। यू कैन डू वन थिंग, कोई आप लोगों में से एक आध ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके पास कोई पेशेंट आता है क्रॉनिक प्रॉब्लम लेकर, इफ द पेशेंट इज कमिंग विद अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, यू कैन यू वन। So suppose if you think it is yin problem, the yang problem, if the yin problem, you can apply all the 6 Leo point. Or the yang problem, you can apply all the, means if the yin problem, you can go to the partner channel and apply all the 6 yang point. You can try this. I have tried and person got very good results. But you can try also. Because I tried, but it was not written anywhere. I tried just for curiosity purpose. I tried. Sometimes curiosity become very bad also. You know that. But this was not bad. This was good. Okay. You can try that and it will work. Yeah. So you can try all the yang Leo. If the person is having yin problem, you can apply all the yang Leo. And the person is having yang problem, you can try all the yin Leo. You can try it. It is very nice treatment. Okay. Yes, Kalpana ji, unmute yourself. सर आई जस्ट वांट टू आस्क कि स्प्लीन 21 पर निडल लगा सकते हैं? लगा सकते हैं अगर आपको लगाना आती है वहां तो। मतलब हॉरिजॉन्टल जाएगी कि वर्टिकल जाएगी? बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जाएगी, वर्टिकल तो लंग के अंदर घुस जाएगी। मतलब स्लैंटिंग वे थोड़ा। या तो लगा सकते हैं ना मतलब? हाँ, स्किन को पुल करना है, ऐसे हम्म। स्किन को पुल करना है, लगा सकते हो। ओके सर, मैंने ये लीवर के पैटर्न का किया था पेशेंट्स पर और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। किया था आपने? यस Very सर। good. क्या किया था? सर वो लीवर चीज स्टैग्नेशन था और एक के केस में ब्लड स्टेजिस वाली प्रॉब्लम थी, बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वंडरफुल। मैग्नेट्स लगाई कि निडल लगाई आपने? म्यूट हो गया, कोई बात नहीं, गुड गुड। यस मंजूश्री जी। नमस्ते सर। हम्म। मैंने आज एक पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल केस है, तो उनका एंगर बहुत सॉलिड है, मतलब वेरी, ही इज जस्ट 25 years old एंड एंगर आउटबर्स्ट काइंड ऑफ एंगर, तो लिवर इज अफेक्टेड। तो मैंने GB37 लगाया आज उनको, GB37 पॉइंट लगाया था, बिकॉज आपने वही समझाया था। तो GB37 लगाया तो थोड़ा कूल डाउन रहा। और अपने हस्बैंड को मैंने लगाया था बिकॉज पैल्पिटेशन और सब कुछ, तो H5 लगाया, H5 टोन किया मैंने, सो दैट ऑल्सो हेल्प्ड। Okay, good, because And your husband. pericardium 6 and H5, these two I used. Okay, pericardium 6 and heart H5. 5 both. Yes. Fine. So now, like it's good, like so you the same concept like any point Leo points treating a self channel as well as a partner channel. You apply that Yes, sir. things and it works. Nice, wonderful. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Sarabjit ji, unmute yourself. Sir, you can hear me, na? Sir, हाँ बोलिए। liver 5 or GB37 is used in urticaria, right? Itching होने के बाद में redness हो जाता है, लेकिन itching के बाद में अगर suppose white skin हो रहा है, तो can we use this or we should use LULI?
No, itching is liver. ओके देन जो व्हाइट जो अभी रेड तो नहीं हो रहा है, अभी व्हाइट हो रहा है स्किन तो भी वो लिवर है, क्योंकि तो इचिंग आती है ना, इचिंग ऐसे यस जो यस, itching आती है, that is लेकिन food. रेडनेस नहीं आ रहा है। हाँ, रेडनेस नहीं, अगर रेडनेस ज्यादा आती है तो फिर वो गुड एंड फायर हो गया. यस, But if we are telling liver fire, but if only itching or the इचिंग एंड intense, व्हाइटनेस हाँ तो वो that is कमिंग अंडर द लिवर. वो बहुत ही लंग्स में क्रॉनिक नहीं टाइप ऑफ द आएगा। इचिंग होती है ना, जिसे कहते हैं मीठी मीठी खुजली, हाँ हाँ, नहीं वो अलग तीखी, हो जाती है. तीखी वाली आएगी। वो तो लिवर ही है. तीखी, तीखा मतलब लिवर, तीखी ओके, मतलब. और जो व्हाइटनेस हो रहा था, स्किन खराब हो रहा है ना, तो लंग्स हैज टू बी टेकन कंट्रोल No, ना। no. That because for the lungs that is a little deeper level in the problem, right? या Itching itself is coming in the wood element. Actually, हाँ itching also having many types. The intense, instant, like too much itching, dull itching, and all. But these all type of the itching, whether the skin become red or the white, we have to arrest the wood because wood is हाँ creating itching. हाँ, इचिंग तो कंट्रोल में हो गया, लेकिन स्किन कैसे ठीक करेंगे? बस आपको वही कुछ दिन प्रोटोकॉल आपको लगाना है. और लेकिन अगर वो इचिंग 100% ठीक हो गई है और अभी भी स्किन रह गई, देन यू कैन गो टू द लंग. लंग भी कर फिर सकते आप लंग में हैं। जाते. ओके ओके सर, थैंक यू। Yes, kindly unmute yourself. Yeah. Sir, actually, I'm having a problem with my ear, sir. This anti-LX point here, it is burning sensation I've got in both the ears. So can I use GB37, sir? This Ye- portion, it's burning from past 1 month, sir. I was thinking it is because of heat. Both the ears, this portion, anti-LX portion. So if it is the burning of the ear, it might be you have to first to do the diagnosis properly, because this might be because of the triple warmer. This might be because of the gallbladder also. So you have to find out the reason, and you can use both the channel. You can also uh, use the leo connecting point of like pericardium, and because pericardium is controlling the triple bomb. If it is triple bomber, then we can go to the pericardium, right? And if it is bigger, like something gallbladder, then we can go to the liver. So you can try liver 5, pericardium 6. But it is better to correlate little more, to correlate your symptoms a little more. And if you are able to do the proper diagnosis that, okay, this channel is affected. Maybe after few or more classes, you will be able to understand this, okay, clearly. That's why we are also discussing pattern in this postgraduate diploma, so that we will be able to understand, okay, this problem having connection with this, okay. So it will come after few days, then you are able to understand why this problem is happening. Yes, unmute yourself, kindly unmute. नमस्कार सर. No, sir. सर एक्चुअली मेरे पास एक पेशेंट आया, ही वाज अबाउट 82 ईयर ओल्ड, और लास्ट 2.5 मंथ से उनको सारी बॉडी में इचिंग हो रही थी. और इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल दोज मेडिसिन, स्किन स्पेशलिस्ट भी दिखा रहे थे, मतलब ही हैज गॉन टू एटलीस्ट 3 4 5 डॉक्टर्स एंड वेरी रिनोन्ड डॉक्टर्स, बट देयर नो रिलीफ. क्योंकि रात को सोना है तो भी इचिंग हो रही है, कभी बाजू में हो रही है, कभी लेग्स में हो रही है, कभी सिर में हो रही है. सर मैंने सर उसको ना जीबी डैम हीट के पॉइंट लगाया. जीबी डैम हीट, जीबी जीबी 10, डैम gallbladder 10, गोला. हाँ जी. तो gallbladder 10 in the head area. हाँ जी, हाँ जी. क्योंकि Okay. मैंने उसका टंग देखी ना, तो राइट हाँ. साइड टंग में थोड़ा वैसे निशान, जो स्टेसिस वाले निशान होते हैं ना, इट वाज लाइक दिस. तो मैंने कहा लेट मी टेक, ईचिंग में ये काम करता गया. तो आई अप्लाइड ओनली मैग्नेट्स. तो अप्लाई 4 दिन लगाए सर. 4 दिन में उसको ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा ठीक हो गए. ही इज एबल टू स्लीप. और अभी मैंने बोला अब 4 5 6 दिन और कराइए आप करो. इट वॉज वंडरफुल रिजल्ट. आई नेवर न्यू कि जीबी डैम बीट इतना बढ़िया काम कर सकती है, जो इचिंग का कोई इलाज नहीं मिल रहा था. इट मेड इट जस्ट पॉसिबल. सर इसमें आप एक्सप्लेन करें, इसमें और क्या होगा? मतलब मैंने तो अपने हिसाब से लगाया सोच के, लेकिन रीजन बिहाइंड मेरे को भी बहुत ज्यादा पता नहीं लगे.
Actually, GB10, I will tell you, GB10 or you're asking about the gallbladder 10, na, right? जी. Actually, gallbladder 10 is a very good point for itching. That is true. Because it expel bind. जो gallbladder 10 होता है ना, generally we are using for all the bind condition. Actually, हाँ. we are अब using I used it in the I backside. used yes sir. Gallbladder 10 is here. Okay. So it is in the backside, and gallbladder 10 we are using for, especially we are telling nervous system itching. Nervous system itching means itching everywhere. Because itching, instead of body, itching is happening in the nervous system. So gallbladder 10 is working on that, because gallbladder 10 is removing the wind and heat from the liver and gallbladder. Ultimately, that is the liver and gallbladder only. Actually, in this connection, we had got this spleen 10 also in this, and UB 18 and 19 both, because they are both covering this gallbladder and liver. Because it is somehow it was connecting a little bit of liver fire also. So liver fire along with this GB, it worked wonder. And Yeah. And actually आपने जो काम किया है ना, वो indirectly liver fire पर ही किया है ना, liver fire पर ही काम किया है. Ultimately you have worked on the liver fire only, and with the help of gallbladder 10 you have worked on nervous system itching. So okay, it's good. So that we should write this point in our patient is okay, but a little bit, I have a little, I wonder this, what are the other things it should be added to make it that next time if any other patient comes like this, we can treat it. Definitely, it's very good. Like in this way, you will able to make good collections of the point, because if you are able to use this point in a very good way, so everyone can note down this, and you can also try this point for your patients, and you can collect the data that how many patients are getting the help of this point. Gallbladder 10. Good point. Wonderful. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Ritu Pandey ji. तो मेरी फ्रेंड है, उसके एक्जिला में काफी इचिंग हो रही है और जेनाइटल्स में, तो DU1 लगा दे, और एक्जिला के लिए क्या लगाएं? When the itching in the genital part and eating in the axilla, that is damp heat in the liver and gallbladder. 4 point. Liver 2-3, gallbladder 13-15, sedation. Okay, and liver 2, liver 3, gallbladder 13, gallbladder 15. Sedation. Only 4 points, sedation. And the diagnosis, this is called the damp heat in the liver and gallbladder. Maybe in the liver only, maybe in the gallbladder only, maybe in the both only. So it is creating itching in the genital part, in the axillary region, and we will able to work with the help of these 2 points. And I will tell you, other than that, आज जैसे हमने बात की है, spleen 21 उनको बोलिए, do the self tapping of spleen 21. And definitely you can ask the person. लियो पॉइंट जो होंगे ना, उसके लिए हम थोड़ा सा भी हमें इतनी जो डैम्प हीट अकेले इस लियो पॉइंट से नहीं निकल पाएगी, एक सिंगल लियो पॉइंट से नहीं निकल सकती, लेकिन 4 पॉइंट से ठीक हो जाएगा, है ना. थैंक यू सर. Okay, welcome everyone. So thank you so much for sharing your very wonderful feedback, and this feedback is also enhancing the knowledge of each other. So like we got very good point, gallbladder 10 for the nervous system itching, which is everywhere in the body. In this way, we have to recollect, we have to collect lots of data, and we can apply in our patients. Neha ji, yes please. सर मेरा आउट ऑफ ए बॉक्स नेगेटिव का एक क्वेश्चन है. जैसे कल रात को मुझे आपको फोन करना पड़ा था कि उसके पीछे रीजन क्या था कि फेस पूरा ब्लू हो गया था. देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब यांग एनर्जी डेफिशिएंट होती है,
Yang means warmness of the body. Yang means circulation of the body. Yang means who protect our pores of the body, control the sweating of the body, control all the holes and the pores of the body. That is the yang energy. Yang energy means circulation. Yang energy means heat of the body. Because of anything, if yang energy is very fast collapsing down, we can't use collapse. Yeah, we can use the yang energy is moving down. Suddenly, it is like if there is a dam having too much water and you are opening the gate of the dam, suddenly there is a flush of water. In the same way, because of there is a suddenly flush of the energy, yang energy is moving down, then there is a sweating because there is a cold body, cold arm, cold feet, blue lips. Sweating, extreme sweating. Sweating is the sun. Because why sweating? Because all the holes and the pores are controlled by yang energy. If yang energy is weak, no control on the urine, no control the stool, no control the pores, lots of sweating. तो yang energy जब कोलैप्स होती है तो एकदम पसीना निकलता है, शरीर ठंडा, ओठ नीले, चेहरा नीला पड़ सकता। तो इसमें क्या करना है, हमें yang energy को प्रोटेक्ट करना है। हाउ टू प्रोटेक्ट द yang energy? Okay. Because there are in the large intestine channel, exactly from here to here, if we go in the center, that is a very good point to improve the yang energy. If you find that someone is having this condition कि आपने निडल लगाई और शरीर ठंडा नीला पड़ गया, तो पहले तो DU-26 इमरजेंसी पॉइंट दबा दो उसका, और फिर थोड़ा ट्रैप करो। That is the rising of the yang energy immediately. Okay. सर क्या ये UB11 पॉइंट को गलत लोकेशन से भी पॉइंट इसका प्रॉब्लम, बट मेरे को लगा सर जैसे मैंने LI11 लगाया है ना उसके इमीडिएटली बाद हुआ था। Yeah, LI11 is the point who clear the heat very fast. LI11 क्या करता है ना, LI11 is very very important. LI11 से हो सकता है क्योंकि उनको हाई बीपी अगर है और आपने LI11 लगाया, उसने हीट को निकाला और एकदम से बॉडी एकदम तीव्रता से एनर्जी निकली। And I will tell you, it's not bad always. It might be something is flushing down, flushing very, very fast. सर आई गॉट स्कैर्ड, वो जो फेस नीला पड़ा ना एंड मेरे को मतलब होठ बिल्कुल नीले हो गए थे। आई गॉट स्कैर्ड, अदरवाइज मैं निडलिंग में कभी डरती नहीं हूँ। Yes, that we can understand. ऐसा होने पे कभी इसके हम हो सकते हैं। That's why we should have moxa in our clinic. कभी भी ऐसा हो, immediately do the moxa around the navel, and we can again improve the yang energies because yang energy का जो सेंटर होता है वो होता है गवर्निंग वेसल फॉर, वहीं से yang energy नाभि चक्र के आसपास से ऊपर चढ़ती है। कभी भी ऐसा हो तो आर्म को टैप करना है और नाभि के आसपास मॉक्सिवेशन कर कर इमीडिएटली yang एनर्जी को राइज कर। सर आज दोबारा करके देखूं क्या? क्या करना है दोबारा? दोबारा के ये ऐसा दोबारा होता है क्या सेम पॉइंट से? हाँ करिए, लेकिन पॉइंट बायलैटरल मत लगाइए और नंबर ऑफ पॉइंट ओके। कम। मैंने सर सिर्फ UB11 बीपी LI कैसा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। पहले हाई था ना? नहीं सर, नॉर्मल। तो किस लिए पॉइंट लगाता है? सर पेन था, देन बोल रहे थे एनर्जी वीक लग रही है, देन आई सेड ओके। मैं पहले से क्या डिहाइड्रेटेड थे? लास्ट टू लास्ट वीक लूज मोशंस थे, लास्ट टू लास्ट वीक 14 नहीं, डेज सेम बिफोर। डे जब आपने ट्रीटमेंट दिया, नो सेम डे थोड़ा नो वीक और डिहाइड्रेटेड थे? नो आपके कोई थर्स्ट, हंगर ऐसा कुछ नहीं था? नो। ठीक है, इट्स ओके, अप्लाई अगेन, नो प्रॉब्लम। ओके, आई ट्राई टुडे आल्सो बिकॉज जब तक नहीं करूंगी पता नहीं चलेगा। हाँ, तो उसमें क्या ना, यू लेस नंबर ऑफ इंस्टेड ऑफ टू मेनी। ओके, मैंने सर UB11, GB34, LI4, LIV3 एंड LI11 लगाया था। आपने पूरे फोरगेट लगा के पूरा स्टैग्नेशन
दूर कर दिया। एनर्जी को खुद ही आपने बहुत फास्ट मूव किया है बॉडी में। You have moved the energy very, very fast because you are using four gates, Li for liver 3. And that is also removing stagnation, chi stagnation. फिर आपने Li11, that is also use less number of points. कुछ कम पॉइंट यूज कर दीजिए क्योंकि everyone is having different in it. Like I'm not telling that we have to use the less number of points for every patient. If the patient is very sensitive, then for that you can use less number of points. अभी आपने कल ही ट्रीटमेंट दिया था तो आज एक दिन का गैप करो फिर कल दो ट्रीटमेंट। जी सर। ओके डॉक्टर ज्योतिका जी। Yes, please. सर जैसे फोर गेट लगाते हैं बायलेटरल करते हैं, लेकिन अगर किसी के पूरे लेग में स्वेलिंग हो रखी है, एक राइट लेग में पूरी स्वेलिंग हो रखी है, तो क्या सिर्फ यूनिलेटरल लगाने से भी हो जाता है काम? Yes, definitely yes. आप तो उसमें हाथ में तो दोनों में लगा दें? हाँ अभी फोरगेट हम लगाते हैं आप 2 hands and 2 legs में, but we can use in one side also because when there are many number of points, that time also we are selecting the points one side so that we can cover many points. Sometimes because see if there are too many points, we are using bilateral, too many needles. So even one side is enough. या सुजोग में लगा ये हाथ में लगा दें या Yes, yes, पैर sujok is सुजोग, also very good. तो दोनों हाथ में लग जाएगा। If you think four gates are very, very necessary and you have to apply in both the hands, then it's okay. Otherwise, you can also पुअर choose a different. सर्कुलेशन हो रही है ना सर, पुअर सर्कुलेशन हो रही है, वो लेग स्वेलिंग हो करते रही हैं है ना, उसमें। फोर गेट में Li4 की जगह लिंगू लगा दो। हाँ वही हो गया सोच एक ही रही तरफ, बस खत्म। हूँ। वो वन साइड ऑपोजिट साइड लगा दें। Yes. हाँ थैंक यू। Kindly unmute yourself, Mr. Mahesh ji. सर नमस्ते सर। नमस्ते सर नमस्कार सर। सर एक फीमेल पेशेंट को 45 इयर्स है सर। शी हैज लिवर एनलार्जमेंट सर एंड स्टमक टाइट है सर, अब ब्लोटिंग भी जरा ज्यादा है सर। प्रोटोकॉल क्या देना है? Actually, we are not discussing the protocols. I'm telling you, this is not the class of protocols. We are discussing how to create protocol. But actually, how to make your own protocol. Okay, sir. So but the enlargement of the liver, like if you ask me fatty liver, grade 1, fatty liver, grade 2, or the liver cirrhosis and all, we are using the protocol of liver chi stagnation plus liver blood stasis. Liver blood stasis. So you can go for that. Liver chi stagnation and liver blood stasis. Because liver chi stagnation and the liver blood stasis are responsible for creating the fatty liver, multiple grades, grade 1, grade 2, or the enlargement of the liver. Got it? Okay, sir. Yeah. Okay, sir. But, thank you, sir. Yes, iPad. Kindly unmute yourself. जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि ड्यूरिंग पीरियड्स जैसे बच्चों को बहुत, हेलो हाँ बोलिए। जी सर, ड्यूरिंग पीरियड्स अगर किसी की फीमेल को बहुत तकलीफ हो और जैसे बेहोशी टाइप का या और भी कुछ बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम दिखने लग जाए, तो कुछ कर सकते हैं क्या उस समय में? Definitely yes. Why not? Definitely जी yes. करना ही चाहिए। If the female is having severe weakness, deficiency of the blood, especially severe weakness during the period, we have to work on the liver blood or the spleen blood. Right? We have to improve the liver blood or the spleen blood. जी, वो तो सर मतलब एकदम सेम मोमेंट पे क्या करें उस समय में, कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आ पाता कि क्या करें अभी समय में। अभी देखो हम प्रोटोकॉल तो अभी आपको नहीं पता। जी जी ठीक है। वो कैसे तो बताएंगे अभी, हमने अभी आपको ना तो पूरा सब बताया। हाँ But anyway, आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं। If the female is having lots of weakness during the period,
period uterus, the liver is supplying blood to the uterus. जी. If the liver is weak, then little bleeding also will create the too much weakness. So you find out and work on the liver blood deficiency. This might be one condition, but there are few another condition also. अभी पैटर्न में हम चले गए. अब पैटर्न में जाऊंगा तो सब लोगों को पता ही नहीं है पैटर्न, तो इट इज क्लास ओनली फॉर यू, देन नॉट फॉर एवरीवन. अब नहीं पैटर्न की सर, मैं बात एक्चुअली करूं, आज ये लेट मी प्रॉब्लम फिनिश. बहुत नहीं, हो अभी रहा हम है. प्रोटोकॉल. जी सर. Heart is also, there is one branch from the heart coming to the uterus, that is called uterus vessel. From the heart there is one branch coming to the uterus, that is called uterus vessel. If the heart is weak, then also during the period female is having weakness, tremendous weakness. But most probably chances that because liver blood deficiency are very commonly found in the female, and they feel weak during the period. क्योंकि यूट्रस से जो ब्लड निकलता है ना, वो क्या है, वो लिवर ब्लड है एक तरह से देखा जाए. सपोज लिवर ब्लड इज वीक, then uterine bleeding will be weak. Liver blood is having too much heat, then uterine bleeding too much. A liver energy is stagnant, then blood will not come very freely from the uterus. Then there is a painful period. If during the period people feel too much weakness, it means why the bleeding is causing weakness, because liver blood is less. तो आप लिवर ब्लड पे थोड़ा काम करिए, और लिवर ब्लड को आप ये समझिए यूट्राइन ब्लड, उस समझ के काम करिए. ये पैटर्न की बात है, ये पैटर्न में डिस्कस की जाएगी. ठीक है, पैटर्न में ही हमने ऑलरेडी समझाई भी है. इसमें थोड़ा सा पढ़िए, नहीं समझ में आया तो फिर मुझे व्हाट्सएप करिएगा. फाइन. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. लेट्स क्लोज द सेशन नाउ. विल सी यू टुमारो ऑन मंडे. गुड नाइट. अगली क्लास में.